हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बी क्रिएटिव बी हैप्पी। तो आज फिर से हम एक नया वीडियो के साथ आए हैं। पर अभी आज का टॉपिक कुछ अलग है क्योंकि बहुत टाइम से व्लॉग्स ही आ रहे थे हमारे चैनल पे। बहुत सारे हमने व्लॉग्स बनाए हैं, बट अब जैसे कि अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया है, कुछ एक दो महीने में सबके एनुअल्स भी स्टार्ट हो रहे होंगे, तो इसीलिए आज का वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड है। आज मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, एक फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ ओनोमैटोपिया। तो ओनोमैटोपिया एक वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जैसी चीज़ को बोला जाता है वैसी उसकी आवाज़ भी होती है। लाइक इफ वी से मियाऊ, तो मियाऊ हम बोलते वैसे ही हैं। एंड कैट जब वो साउंड करते हैं ना, मियाऊ की साउंड भी वैसी आती है, लाइक क्रंच। सो दीज आर दी वर्ड्स जिनकी बोला भी वैसे ही जाता है, आवाज़ भी उसी टाइप में आती है। उनको कहते हैं ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्लास 6 में भी समझाया जाता है। तो आज मैंने ये एक स्टोरी लिखी है ओनोमैटोपिया पे, जो आप स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं स्टोरी राइटिंग, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल एज एन सैम्पल स्टोरी। तो चलिए अब देखते हैं। Dazzling nature, the best soothing healer. One shiny morning, Ankita came to her bedroom to take her books. Suddenly, she saw a box falling with a loud thud, and a ball came leaping out of it. Bam and boing. When she went to touch the ball, fizz! The room suddenly changed into a beautiful dense forest. Gee! Ankita shouted in surprise. She was perplexed about how the room changed into a forest. But as Ankita was a strong and courageous girl, she decided to move ahead. On her way, she saw the rocks kerplunk as they fell into the lake, the birds chirp sitting on the trees, and the elephant trumpet and rumbles, which all truly meant as the beauty of nature. Immediately, the pitter-patter rain started, following the thunder crashes. Then all at once some crunch leaves fell on the ground, and she quickly fell asleep in the shade of the tree. The next moment she caught herself sleeping on her bed, following some Z's. Then, as habitual, she heard the roaming of the cars and the pit pat of people walking on the road. From there, Ankita experienced going to a different face of the earth, where she finds peace, love, and happiness, known as the nature.